everyone, welcome back to my channel Gyaan Kosh. Today we are going to discuss Chapter 1 Crop Production and Management of Class 8 Science book. So let's get started. First of all, what is a crop? As the chapter's name is Crop Production and Management. It means production of crop, मतलब crop को कैसे उगाया जाता है, सारे steps एट लास्ट जब तक उसे हार्वेस्ट करते हैं. सो जितने भी उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो हमें पढ़ने हैं. एंड उसकी मैनेजमेंट, उसको काटने के बाद भी हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे उसको बाद में यूज़ किया जाता है, एवरीथिंग we will be reading in this chapter. Okay, first of all, crop. Crop is plant grown by man on a large scale to obtain food, clothing and other useful products. It is crop. In simple language, it is plants of the same kind grown at one place on a large scale that are known as crop. For example, a crop of wheat means that all the plant grown in the field are of wheat. इसका मतलब है कि मेरा जो फील्ड है उसमें मैंने वीट के बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं, सिर्फ वीट की. देन मैं वीट को क्या कहूँगी? वीट इज़ रेफर्ड टू क्रॉप, क्योंकि वीट इज each and every plant in the field is of wheat. So wheat के ही है, इसी वजह से मैं उसको crop कह सकती हूँ. When a plant of the same kind is grown at one place on a large scale, then we refer it as a crop and it provides us food, clothing and other useful products. वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देगा, तभी हम उसको ग्रो करते हैं. कुछ हमें रिजल्ट में कुछ मिले उससे यूजफुल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई वी ग्रो देम. Some examples of crops now. Cereal crops, wheat, rice, paddy, maize, bajra, etc. all are cereal crops. Now pulses, gram, pea, bean, moong, oil seeds. They are groundnut, mustard, castor, sunflower. Vegetables, tomato, cabbage, spinach, brinjal, cauliflower. Fruits, banana, mango, guava, apple, pear. All these are crops. Also other plantation crops like tea, coffee, rubber, coconut, sugar crop, sugar cane, sugar beet, all are what? Examples of crops. Now types of crops. There are 3 types of crops, but I think that in your book there are crops based on season of cultivation, but we will read about these also. Based on lifespan, there are 3 kinds: annuals, biennials and perennials. Annuals means they complete the life cycle in 1 year or 1 season. For example, wheat and pea. जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करे या एक सीजन में कंप्लीट करे उन्हें हम क्या कहते हैं? एनुअल्स. नाउ बियानियल्स, दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 years और 2 seasons. कैरेट एंड रेडिश एग्जाम्पल हैं इसके. पेरेनियल्स, दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, वो बहुत सालों तक रहता है, उनका लाइफ साइकिल सालों में कंप्लीट होता है. दैट जिंजर एंड पाइन. नाउ बेस्ड ऑन सीजन ऑफ कल्टिवेशन, दीज आर इन योर बुक. Kharif crop and Rabi crop. Kharif crops are the crops which are sown at the beginning of the monsoon season, that is in the month of June or July, and are harvested at the end of the monsoon season or at the last of the monsoon season, that is in the month of September or October. For example, rice and maize. Now Rabi crop, crops which are sown in the beginning of winter season in the month of October or November and are harvested in March or April. Examples are wheat and gram. Now based on use, on the basis of use, there are 2 kinds: food crops and cash crops. Food crops नाम से पता चल रहा है, means the crops which are grown to fulfill the basic food requirement. जो food की requirement पूरी करने के लिए grow किए जाएं, that are cereals and pulses. Cash crops commercial use, मतलब commercial purpose के लिए जिन्हें grow किया जाए, वो है हमारे tea and coffee. Now agriculture. What is agriculture? It is a science or an art that deals with the mass production of crop, plants and animals useful to human beings. It means it is the
art and science of cultivating soil, producing crop, rearing animal for food and other useful products. It means when we हम जब प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, हम एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, या हम किसी भी टाइप के कैश क्रॉप लो आप, फूड क्रॉप को, किसी भी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कहते हैं, उसे कर रहे हैं, तो देन वाई वी आर डूइंग फॉर ऑब्टेनिंग समथिंग. हम क्यों कर रहे हैं क्यों प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, क्यों एनिमल्स को पाल रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए. वी नीड समथिंग दैट इज फूड और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. लाइक आई एम रियरिंग अ शीप फॉर एग्जाम्पल, सो मैं उससे क्या लूँगी? वूल. या वैसे अगर मैंने अपने पास काऊ रखी हुई है तो मैं उससे क्या लूँगी? आई विल ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम दैट. मैंने हैन रखा हुआ है तो मैं उससे एग लूँगी. वैसे ही मैंने अगर अपने घर में एक बनाना ट्री उगाया हुआ है तो मैं बनाना लूँगी उससे. मैंने एप्पल ट्री उगाया तो मैं एप्पल लूँगी. तो कुछ तो मुझे मिल रहा है ना उनसे, तभी मैं उनको उगा रही हूँ. तो जो वो पूरा प्रोसेस है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. उस आर्ट को, साइंस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं. ओके. अर्ली ह्यूमन्स भी ऐसा करते थे. वो एडिबल पार्ट्स जो प्लांट्स के थे उनको कलेक्ट करते थे. क्यों करते थे? बिकॉज दे यूज टू ईट देम फॉर फूड. वो उनको कलेक्ट करते थे. However, when he observed that seeds gave rise to new plants, they started farming and they began to live a settled life. As time passed, he tried to improve the wild varieties of plants to meet his demands. Crop plants grown today have evolved due to this human activity which occurred over 2000 years ago. हमने नोटिस किया कि प्लांट से प्लांट्स में से प्लांट्स के सीड से नए प्लांट उग रहे थे. सो हमने नोटिस किया ये कि एक छोटा सा सीड होता है, उसको हम वो मिट्टी में गिर जाता है, थोड़े दिन बाद उसके ऊपर और मिट्टी आ जाती है, वो नीचे दब जाता है एंड न्यू एक प्लांट उग जाता है. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी करना शुरू किया एंड वो क्या करना सीख गए? फार्मिंग. एंड दे स्टार्टेड टू लिव अ सेटल लाइफ. ऐसे ही हमने डिफरेंट वेराइटीज़ को खाना स्टार्ट किया. क्यों किया? क्योंकि हम अपनी नीड्स पूरी करनी थी, अपनी डिमांड्स पूरी करनी थी. नाउ नेक्स्ट, basic practices of crop production. There are main 7 practices. Okay, first is preparation of soil. That has two processes in it: bluffing and leveling. They are the main. Next is selection and sowing of seeds. Third is adding manure and fertilizers for the replenishment of nutrients in the soil. Irrigation, removal of seeds, harvesting and storage of food grains. Okay, so let's read about them. Preparation of soil. First process. The soil is prepared for sowing seeds of the crop by pluffing, harrowing, leveling and adding manure. ये मैंने आपको 2 बताए थे, pluffing and leveling. ये भी कुछ processes है, but the main are pluffing and leveling. But ये भी है, we can't say that they are not. Pluffing है. Pluffing में the process of loosening and turning of the soil is known as bluffing. It is also known as tilling also. Now, क्यों करते हैं हम bluffing? Why? Because it has some benefits. It provides some advantages to us. Those advantages are: it brings fresh nutrients to the surface. It loosens soil so that roots can penetrate easily. Soil is able to hold more moisture after ploughing and weeds are removed. And ploughing हम करते हैं plough से, या फिर it is also, the plough is drawn by a pair of bulls or tractor. Now, harrowing. It is a method to destroy germinating weeds. Weeds क्या होते हैं? Unwanted plants that grow by their own. हम उन्हें उगाते नहीं हैं, बट वो खुद ही उग जाते हैं. वो क्यों हम उनको उखाड़ते हैं? हम इसलिए उनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे कि जब हम अपनी क्रॉप को ग्रो करें तो वो हमारी क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स ना ले, उनमें कंपटीशन कम रहे. मतलब कि जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, मैंने एक वीट की क्रॉप उगाई हुई है अपने फील्ड में, बीच बीच में छोटे छोटे वीट, जैसे चुलाई, उसे हम वीट कहते हैं, ऐसा कुछ उग गया है. एंड वो मेरी क्रॉप को जितना सनलाइट मिलनी थी वो भी गेन कर रहा है. अगर वो नहीं होता तो मेरी क्रॉप को वो पूरी सनलाइट मिलती. सो
इससे मेरी क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट मिल रहा है, पानी मैं उसको दूंगी तो थोड़ा पानी उसमें भी जाएगा, मेरे प्लांट में कम मतलब मेरे वीट वाली क्रॉप में कम जाएगा. सो दैट इज़ वाई वी रिमूव देम. ओके, सो हैरोइंग हम करते हैं हैरो या स्पाइक से. प्लफिंग का वर्ड है प्लफ, मतलब किससे होता है ये याद करने की इजी सी ट्रिक है. एंड हैरोइंग होता है हैरो से या स्पाइक टूथ हैरो से. लेवलिंग इज अ प्रोसेस that involves breaking big lumps of soil and leveling it. Leveling हम करते हैं wooden और iron plank से. And why do we do leveling? क्यों करते हैं हम leveling? Because leveling helps in the uniform distribution of water during irrigation. It prevents topsoil from being carried away and it prevents loss of moisture. Manuring. Next, manuring process जो हमारा है, it is done to help in proper mixing of soil with manure, helps us to make the soil fertile. मीन्स कि हम क्यों करते हैं प्लफिंग इनके बाद क्यों करते हैं? बिकॉज the manure is added to the soil before ploughing because this helps in proper mixing of soil with the manure. Some fertilizers are also added before the sowing of seeds and some are added later. ठीक है. Now next, implements used for ploughing. ये मैंने आपको बता दिया था. Plough, hoe and cultivator are the implements. Now let's read about them also. Plough is a T-shaped instrument made of either wood or metal. One of the arms of the iron plough, which is wedge-shaped, penetrates the soil. A plough is generally drawn by a pair of bullocks or horses. The plough is attached to the bullocks by using a yoke. The farmer controls the plough and guides the bullocks. Hoe. Hoe is used to remove weeds as well as loosen the soil. A strong, broad and bent blade made of iron is fixed at one end of the hoe, which acts like a blade. The hoe is pulled by animals. Cultivators. The cultivator is a tractor-driven agricultural implement used for ploughing. It has many plough shears which can dig into considerable area of soil and at the same time loosens it and turn it. तो ये तो एक टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि वुड और मेटल से बनता है. ये बुलॉक्स और होसेस चलाते हैं इसको. फॉर प्लफिंग हम इसको यूज़ करते हैं. हो जो है वो रिमूविंग ऑफ वीड्स में हेल्प करता है और सॉइल को लूज करने में. इट इज़ ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स. कल्टिवेटर जो है वो ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, मतलब इसको ट्रैक्टर ड्राइव करता है. इसके अंदर एक प्लफ शेयर होता है, मतलब इसके इट हैज़ बहुत सारे होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं. एंड इट कैन dig into a considerable area of the soil at the same time, and it also loosens the soil at the same time. Now sowing. Sowing क्या है? It means scattering of the seeds in the soil for growing of crop plants. किसी बीज को उगाना, that is sowing. But precautions for sowing seeds. Seeds should be sown at the right depth in the soil suitable for germination. Seeds should be sown at right intervals for the proper spacing in the field. Seeds should not be sown in dry soil. Seeds should not be sown in highly wet soil. कंक्लूजन ये है कि हमें राइट डेप्थ पे उगाना चाहिए. ज़्यादा वो नीदर टू शेलो और नॉट टू डीप नहीं होना चाहिए वो. क्योंकि उससे अगर हम राइट डेप्थ पे उगाएंगे तो उसको सूटेबल जर्मिनेशन होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. एंड राइट इंटरवल्स पे इसलिए उगाते हैं सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल. ड्राई सॉइल और वेट सॉइल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सॉइल का, मतलब ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वेट होनी चाहिए. एंड ये तो प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स आ गए. बट प्रिकॉशंस विच वी need to take before sowing seeds are, we should take only clean, healthy and disease-free seeds, and seeds should be treated with fungicides. Fungicides क्या होते हैं? Chemicals that are used to kill disease causing fungi. Okay, now there are different methods for sowing seeds. First is broadcasting. इससे हम हाथों से ही ऐसे scatter कर देते हैं seeds को, but it is not a good method because there is no non-uniform distribution of seeds and it is not
it doesn't ensure proper spacing, so it is not efficient method. Now drilling is using seed drill machine. Seed drill is a machine that has a funnel shaped seed bowl connected to several tubes. That drill is attached to plough, and as the plough makes a furrow along the field, the seed in the seed bowl are released through the tubes and gets deposited in the soil. So they are very helpful. They have so many advantages. Like seeds are sown at the correct depth and correct intervals. Seeds cannot be picked up by the birds because they cover the soil on the seeds. Now transplantation. It is one more method after transplantation. But let's read about transplantation first. ट्रांसप्लांटेशन है कि मैं नर्सरी में गई, मैंने वहाँ से एक सीडलिंग लिया और मैंने उसको अपने वहाँ से ला के अपनी जो गार्डन या फील्ड में उगा लिया. सो दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन. ये भी एक अच्छा मेथड है बिकॉज इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स. स्पेसिंग भी कंट्रोल हो सकती है क्योंकि मैनुअल प्लांटेशन है. एंड प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी मिल जाते हैं फ्रॉम द सॉइल. One more method is by traditional tool. By using traditional tools. Traditional tools for sowing is shaped like a funnel, having 2 or 3 vertical long tubes with sharp ends. The seeds are filled into the funnel and are passed down from the pipes with the sharp ends. The sharp ends pierce the soil and place the seeds there. It is not much important, so the main are these 3. Now adding manure and fertilizers to replenish the soil. अब क्यों उगाते हैं, मतलब क्यों डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स? क्योंकि जो पिछली बार हमने क्रॉप उगाई थी उसने सारा न्यूट्रिएंट ले लिया होगा सॉइल का. सॉइल में डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, उसको और फर्टाइल करने के लिए हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं. प्लांट रिक्वायर मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड दे कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द सॉइल. The deficiency of plant nutrients and organic matter in the soil is made up by adding manure and fertilizers to the soil. Now, types of fertilizers. Natural fertilizers, manure, compost and green manure. The dead and decaying vegetable matters, waste from the farms, household waste, excreta of animals from manure. So ये natural होता है, ये हम ही फार्मर कहीं पे भी बना सकता है इन चीज़ों को यूज़ करिए. कंपोस्ट डिकम्पोजिशन से होता है वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट की. इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इट इज़ natural fertilizer, and organic substances are decomposed by bacteria and are converted into humus. Green manure. Green manure is when a farmer grows crops like leguminous plants. Also they can grow sun, hemp or sesbina before the sowing of seeds. Because these plants decompose in soil and increase the soil fertility, they also provide protection against the soil erosion and leaching. Leguminous plants होते हैं जिनके अंदर जिनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जिन्हें हम नाइट्रेट्स कहते हैं, एंड दे आर इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. Okay, now advantages of natural fertilizers. They increase the water holding capacity of soil, makes the soil porous, increase the number of useful microbes in the soil and improve the soil texture. Disadvantages है कि नोट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं होते हैं, एंड इनकन्वीनियंट होते हैं ये स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में. आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे आर यूज्ड टू फर्टिलाइज अ लार्जर एरिया एट द टाइम. दे आर मेड ऑफ अमोनिया, यूरिया, फॉस्फोरस, पोटैश, phosphate,
Advantages of artificial fertilizers: they're nutrient specific, have plant nutrients in concentrated form, provide a quick replenishment of plants nutrients in soil, highly soluble in water, easily absorbed by plants, easy to store, transport and handle. Now disadvantages are: they reduce the fertility of the soil, changes the chemical nature of the soil and may cause water pollution. Okay, now difference between the manure and the fertilizer. Manure जो होता है that the natural substance obtained by owing to the decomposition of plants and animals remains by bacteria. They are less rich in plant nutrients and can be prepared in fields and convenient to store and transport. The fertilizers are inorganic or compounds rich in plants nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. They are manufactured in factories and they are easy to transport and store. Now मैं प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ बताऊंगी आपको इनका डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर वाइज जो हमारा मैन्योर है वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है. नेक्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड पॉइंट. जो मैन्योर है वो फील्ड्स में भी प्रिपेयर हो सकता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, एक्सक्रीटा, ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा. एंड फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में ही रेडी होते हैं, मतलब प्रिपेयर होते हैं. ह्यूमस जो मैन्योर में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है और फर्टिलाइजर्स में कोई ह्यूमस नहीं होता है, मतलब वो प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को कोई ह्यूमस, बट मैन्योर करते हैं. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, मैन्योर में लेस अमाउंट होता है प्लांट मतलब दे contain less amount of essential plant nutrients, but fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fifth, cost. Manure, they are not expensive, but fertilizers are costly and expensive. And examples of manure are hemp or sesbania. Fertilizers के example है यूरिया and potash. Okay, now next thing is crop rotation. What is crop rotation? Crop rotation एक method है of growing different crops alternately on the same field. For example, when a cereal crop such as maize is grown first, it takes away a lot of nitrogen from the soil for its growth and makes the soil nitrogen deficient. When leguminous crops such as pulses are grown in the same field, the crops with nitrogen fixing bacteria enrich the soil with nitrogen compounds and increase its fertility. मैंने अभी आपको बताया था leguminous crops grow करते हैं जिनमें क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स जिन्हें हम नाइट्रेट्स कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. क्रॉप रोटेशन में हम एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स उगाते हैं हर सीजन में. एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन आर: इट अलाउज सॉइल to recover its lost nutrients, it helps to control pests, weeds and diseases, it helps to reduce the soil of chemical fertilizers, improves fertility of the soil. Now organic farming. Organic farming is the kind of farming in which crops are grown without using chemical fertilizers and pesticides. Means organic तो है ही कुछ भी chemical use नहीं होता है जिसमें. So food grown by organic farming are known as organic food. आपने कभी देखा होगा ऑर्गेनिक जूस, ऑर्गेनिक लिखा आता है ऊपर ऑर्गेनिक जूस एंड ऑल प्रोडक्ट्स के आगे. सो दैट मीन्स दे आर नो केमिकल्स इन दैम, या उन्हें हमने खुद ही प्लांट्स वगैरह से प्रिपेयर किया है नेचुरल चीज़ों से. नाउ इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द crop plants in the fields through canals, wells, reservoirs, tubewells, etc. That is known as irrigation. इरिगेशन में एक प्रोसेस है जिसमें रेन के अलावा जो हम पानी देते हैं अपनी क्रॉप्स को सप्लाई, जो पानी हम करते हैं रेन के एक्सेप्ट द वाटर from the rain, that is known as irrigation. The supply of water to the crop plants at regular intervals through sources other than rain is known as irrigation.
Now needs further irrigation to make the soil soft, due to which bluffing of the field can become easier, to provide manufacture for germination of seeds, to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Factor affecting the irrigation requirement of crops are nature of the crop, nature of the soil and season. Methods for irrigation. कैनाल इरिगेशन, कैनाल से बनाए जाते हैं और कैनाल से जो मेन सोर्स है उससे कनेक्शन होता है एंड डिफरेंट फील्ड्स में उसका कनेक्शन, उसकी ब्रांचेस होती हैं एंड इट सप्लाइज वाटर टू दैट फील्ड. मोथ या पुली सिस्टम में इनमें हम रॉप से एक बकेट को एक जो कुआं वेल या कुएं में डाल दिया जाता है. वी पुल दैट rope which is having the bucket attached to it, brings water outside, and that rope is either pulled by animal or the man. ये मोत या पुली सिस्टम है. पर्शियन व्हील जिसे हम राहत सिस्टम भी कहते हैं. इन दिस a Persian wheel consisting of large wooden wheel with several buckets arranged on its outer rim, that is known as Persian wheel और राहत सिस्टम. इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ अटैच्ड होती हैं वुडन थिक से व्हील पे. And swing basket method is an ancient water lifting device. Two people stand facing each other and they swing the basket to fill the water. The basket is raised and water is discharged in the crop field daily. The daily is generally used to lift water from an unlined well, stream or pond. And chain pump भी एक process है which is used to lift water from a shallow well. And जो well है वो 6 meters की डेप्थ होती है उसकी. So ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको इतना. कभी आप किसी फील्ड में जाओगे so you will notice these things and then you will revise them, you will relate them. Okay, now methods of weeding: by hand, by using implements, by spraying weedicides. Okay, so by hand हम उनको हाथ से रिमूव कर दें, उखाड़ दें, so that is known as by hand, the weeding by hand. Now using implements like trowel, harrow and hoe. Now spraying weedicides में हमारे 2,4-D MCPA. 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-dichlorophenolic acetic acid and MCPA is 2-methyl-4-chloro-1-phenoxyacetic acid. Some more are Butterchler, Dalapone, Cesiazine, all are weedicides. We spray them and they just remove them. Now harvesting. Harvesting is the last process. It is not the last process but जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है हम उसको कट कर देते हैं, उसको गैदर कर देते हैं. लास्ट प्रोसेस हमारा स्टोरेज है. बिफोर दैट ये लास्ट सेकेंड आई गेस. तो इसमें हम जब हमारी क्रॉप 3-4 months लेता है क्रॉप को मैच्योर होने में, सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में, उसको मैच्योर होने के बाद जब हम उसको कट करते हैं और गैदर करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. उस प्रोसेस को वंस द क्रॉप मैच्योर्स इट इज़ हार्वेस्टेड. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. Okay, अब threshing, winnowing, ये भी हम कुछ terms read करेंगे. Threshing is process of beating grains from stems. उनको ज़मीन पे तेज मारना so that उनमें जो chaff है या कुछ भी extra unwanted सा substance मतलब husk वगैरह वो remove हो जाए. Winnowing में हम ऊपर एक विनोइंग बास्केट आती है उसको हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट टू मिक्स देम. एंड जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ नीचे चले जाते हैं. जो हैवी पार्टिकल्स ग्रेन के रहते हैं वो वर्टिकली गिरते हैं. सो हमारा सेपरेशन हो जाता है. ओके, नाउ
अब जब हमारी हार्वेस्टिंग होने के बाद हम यहाँ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्ट सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू. नाउ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. Storage of food grains means storing them after harvesting. Harvested grains contain a lot of moisture, hence they are first dried and then they are sold in the market or they are stored somewhere until they are sold in the market. तो हम उनको स्टोर कहाँ करते हैं? दे आर स्टोर्ड इन सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स. मतलब अगर स्मॉल स्केल पे हमने कहीं उगाया तो फार्मर उसको जूट बैग्स या मेटलिक बिन्स में स्टोर करेगा. अगर हमने उनको कमर्शियल या लार्ज स्केल पे उगाया है तो हम उनको कहाँ पे? गनी बैग्स इन ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं या सिलोज में. ओके, नाउ food from animals. But I want to tell you one more thing, that is buffer stock. What is a buffer stock? To ensure, मतलब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा ग्रेन है तो मैं उनको स्टोर करके, गवर्नमेंट रखती है ये वैसे, तो गवर्नमेंट स्टोर करती है एक्स्ट्रा फूड को. जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, देन दे कैन यूज़ दैट प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड एक्स्ट्रा ग्रेन. बफर स्टॉक तब के नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए पहले ही हम स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा में. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये तो मैंने आपको बताया था. फ़िश कहाँ से मिलेगी? हमें फ़िश से मिलेगी. सोर्स एनिमल इसका फ़िश है. हाईली न्यूट्रिशन, इजीली डाइजेस्टेबल फूड है. हनी हमें हनी बी से मिलेगा. हाईली न्यूट्रिशियस इन न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, सॉरी, meat and egg, they are rich in proteins and we get them from goat, sheep, fish, hen and duck. Milk by cow, buffalo and goat, and they provide us milk and milk products which are highly nutritious food. Animal husbandry is the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, carrying and breeding of domesticated animals. Important practices of animal husbandry are proper feeding of animals, shelter of animals, prevention and cure of diseases in animals, proper breeding in animals. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like this video, comment, share with your friends if you find it useful, and also press the bell icon so that you can get notifications of our upcoming videos. Bye bye.